हेलो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन ऑफ वर्चुअल लैब इन टीचिंग लर्निंग का जो कोर्स है, इसमें जो केमिस्ट्री वाली क्विज है, इसी कोर्स के आंसर आज हम लेके आए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एवरी सब्जेक्ट्स की ये क्विज यहाँ पर शो कर रहा है। मैथ्स की, बायोलॉजी के, फिजिक्स की हो चुकी है, ठीक है। केमिस्ट्री, ये ठीक है। फिजिक्स की ये क्विज हो चुकी है सबसे पहले, फिर बायोलॉजी की हुई है, नेक्स्ट मैथ की, और उसके बाद जो क्विज हुई है ये हमारी है केमिस्ट्री की, जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 30 अप्रैल तक आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं केमिस्ट्री में सभी क्विज में इनमें। और जो इसकी जो बाकी की क्विज के आंसर्स है उसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। क्विज को सॉल्व करने का आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। 3 अटेम्प्ट में आपको 70% क्वेश्चन सही करने, यानी कि 20 में से आपको 14 क्वेश्चन को सही करना है। सबसे पहले आपको जो कोर्स को ज्वाइन करना है, जो मॉड्यूल्स आएंगे सभी मॉड्यूल्स में करके कंप्लीट करना। उसके बाद लास्ट में असेसमेंट में हुई जाएगी, जिसके आपको क्वेश्चन के सही आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स। करेक्ट आंसर डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन टीचर्स ensure effective learning during a virtual lab demonstration. Correct answer by linking lab activities to real world application. Next question, using virtual lab on Diksha for chemistry learning. Correct answer makes all experimentals hazards free. Next question, which of the following is not true about the pedagogical integration of virtual labs? Correct answer, root learning. Next question, the virtual labs are based on the idea that correct answer labs experiments can be taught using the internet and can access anytime, anywhere. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ virtual labs available on the diksha portal is to correct answer provide remote access to interactive experiments. Next question, what makes virtual labs on diksha particularly effective or for learning? Correct answer visuals and interactive demonstration of complex experiments. Next, virtual labs help learning in following way. Correct answer, perform experiments multiple times without consuming chemicals. Next, virtual labs on Diksha are aligned with the virtual educational policy. Correct answer, NEP 2020, National Education Policy 2020. Next question, virtual labs e-connected available are from grade. Correct answer 6 to 12. Next, virtual labs allow learner to correct answer interact with virtual models and environments. Next question. In the virtual lab experiment oxidation of alcohol, which reagent acts as the oxidizing agents? Correct answer potassium dichromate. Next question. The following features of virtual labs on Diksha enhance repeated experimentation. Correct answer freedom to repeat experiments multiple times. Next question, which of the following is a feature of formative assessment? Correct answer, all of the above. Next question, which labs help bridge gaps in conceptual understanding? Correct answer, by enabling experimental and self-paced learning. Next, which labs do not help teachers in which of the following way? Correct answer, excluding physical lab in school. Next, the NEP approach to science education. Correct answer है holistic, experimental and hands-on learning. Next, virtual labs experiments on the oxidation of alcohol are advantage compared to a real labs. To correct answer, all of the above. Next question, which features of virtual lab is not disseminated through Diksha? Correct answer, form. Next question, virtual lab can be accessed through correct answer Diksha map apps, Diksha mobile apps और वेबसाइट। ये थे हमारे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। एक बार आप रिव्यू पे क्लिक करके जल्द से चेक कर सकते हो, कोई आपको गलत तो नहीं हुआ। इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपको स्कोर यहाँ पर दिखा देगा कि आपका कितना स्कोर है। अगर आपका स्कोर कम है 14 से तो आप इसको रिड्यू करके दोबारा से इस क्विज को सॉल्व करना। जब आपके क्वेश्चन 20 में से 14 सही होंगे तभी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और जो आगे क्विज हुई आगे की
जैसे कंप्यूटर साइंस की क्विज है, आगे हमारी एसएसटी की है, लैंग्वेज की है, उनकी क्विज की जो वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे, ये जब क्विज होगी तब मिल जाएंगे, और जो पीछे क्विज हो चुकी है उनकी लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।